Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Abdul Ghaffar, Chairperson, Department of Mathematics, Ghazi University, Dera Ghazi Khan. Today I will discuss strategies for writing literature review. What are the main strategies that are involved in writing an effective literature review? Before going to this topic, I will explain the purpose of a literature review. To discuss the purpose of an effective literature review, I will explain that the effective literature review is multi-faced and serves several key roles in academic research. Here is an outline of purpose and basic requirement, along with strategies for critical assessment and drafting. The first one, purpose of a literature review. We will discuss the term, provide context and background. To provide background information means provide context and background. It helps establish to construct for the research by summarizing what is already known on the topic. It identifies the gaps in research. It points out areas that have not been explored or have limited coverage, justifying the need for your research, demonstrate the understanding which will showcase your familiarity with the field and your capability to engage with existing scholarship. To support your study framework, set the stage for your study, rationale, and the development of hypotheses or the research question. Avoid duplication. When you are writing the background information, you should avoid duplication, means ensures that your research adds to the existing body of knowledge rather than repeating the previous studies. Basic requirement of an effective literature review. जब हम बात करते हैं basic requirement of an effective literature review, comprehensive coverage discuss करते हैं, include the relevant and recent studies that relate your research topic. और नेक्स्ट जब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं synthesis and analysis. Go beyond simple summarization or synthesizing the finding to identify the pattern and relationship. फिर फर्दर जब हम इसमें डिस्कस करते हैं क्रिटिकल असेसमेंट की, analyze and critique studies rather than just describe them, highlight strengths, weaknesses, and bases. And then organization and cohesion. Present information logically, often grouped by them, methodology or chronological development,
और फिर जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि जो क्रोनिकल डेवलपमेंट्स हैं, या हम बात करते हैं प्रॉपर साइटेशंस की, attribute ideas correctly to their original source using the appropriate citation style. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास साइटेशन स्टाइल है, जिस तरह एपीए है, एमएलए है, चिकागो स्ट्रेटजीज फॉर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ रिसर्च, देन हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजीज फॉर क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ रिसर्च मटेरियल, evaluate the source credibility, assess the author expertise, the publication quickly, and the research reliability, identifying the research objective and method, understand the purpose of each study and how it was conducted, evaluate relevance and look for the limitations and basis. Note, any limitation in the scope, sample size, or potential basis that might affect the study validity. Compare and contrast studies. Find the commonalities and differences among the study to identify where the consensus exists and where the contradiction arise. Strategies for inventing, organizing, and drafting a literature review. प्रिलिमिनरी रिसर्च को हम डिस्कस करते हैं. कंडक्ट ए ब्रॉड सर्च, gather initial resources using the keyword and database relevant to your field, and then create an outline. Develop a structure for your review, often starting with an introduction, followed by the section that group study thematically or methodologically, and conclude with a summary and gap identified. और देन हम बात करते हैं ड्राफ्ट समरीज एंड सिंथेसिस की. We concise summaries of each source and synthesis, finding across the source to construct a coherent narrative. और फिर हम उसमें क्या करते हैं, लिंक फाइंडिंग करते हैं. Connect your findings to highlight trend and inconsistencies and show your work contribute to the discussion, revise or flow and clarity. Ensure that your review reads smoothly and logically transition between section and ideas. Citing the source appropriately in text citation, ensure each source is cited appropriately within the text using your choosing style, just like author here in APA. रेफरेंस लिस्ट की बात करते हैं, उसमें हम क्या बात करते हैं कि include a comprehensive list of all sources cited at the end of your document, formatted per the chosen citation style. Direct quotes and paraphrasing. Use direct quotes sparingly and ensure the paraphrasing is done accurately while maintaining the original meaning. By the following these guidelines, you will create a literature review that effectively supports your research, demonstrates the critical thinking, and adheres to academic standards. अगर हम पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू को अगर डिस्कस करें उर्दू में, तो उसको कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे. द लिटरेचर रिव्यू इज क्रिटिकल लुक एट द एग्जिस्टिंग रिसर्च दैट सिग्निफिकेंट टू द वर्क दैट यू आर कैरिंग आउट. इसका मतलब क्या है, यहाँ एक मुअस्सर अदब का जायजा लिखने का मकसद और उसकी बुनियादी ज़रूरियात का खाका पेश किया गया है. साथ ही तहकीकाती मवाद का तनकीदी जायजा लेने और जायजा लिखने की हिकमत अमली भी शामिल है.
मुअस्सिर अदब के जायजे का मकसद क्या होता है? अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास इफेक्टिव लिटरेचर है, ठीक है, उसके जायजे का मकसद क्या है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? सियाक व सबात फराहम करना, तहकीक के पस मंज़र को बयान करता है और मौजू पर मौजूदा इल्म का खुलासा पेश करता है। तख्लीक जो यानी तहकीक तहकीकी खला की निशानदाही करना, जो उसके अंदर गैप्स हैं, दूसरे लफ्ज़ों में उनको आइडेंटिफाई करना, इन शोबों की निशानदाही करता है जिनका मुकम्मल जायजा नहीं लिया गया या इन पर कम तहकीक हुई है, जिससे आपकी तहकीक की ज़रूरत को जायज़ करार देता है। और फिर हम बात करते हैं कि समझ बूझ का मुज़ाहरा करना। जब हम इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू को डिस्कस करते हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, वो हमारे पास हमने 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं: टू प्रोवाइड द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, टू एस्टेब्लिश द इम्पोर्टेंस, टू डिमॉन्स्ट्रेट द फेमिलियरिटी, टू क्रेव आउट ए स्पेस फॉर फर्दर रिसर्च। तो इसको जब हम मज़ीद एलोब्रेट करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम किस तरीके से और कैसे आप लोगों तक पहुंचाएं या कैसे आपको समझाएं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समझ बूझ का मुजाहरा करना। ये जाहिर करता है कि आप मुतलका शोबे से वाकिफ़ हैं और मौजूदा इल्मी मवाद के साथ मशगूल होने की सलाहियत रखते हैं। अब जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो इससे ये भी क्लियर होता है कि तहकीक के फ्रेमवर्क की आप हमायत कर रहे हैं। आपकी तहकीक की वजह और मफरूजात या तहकीकी सवालात के इत्तका के लिए राह हमवार करता है। एक जो मेन पॉइंट है आपका, जब हम बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं, उसमें क्या होता है? तकरार तकरार से बचना, यानी अवॉइड फ्रॉम रिपीटिशन, इस बात को यकीनी बनाता है कि आपकी तहकीक मौजूदा इल्म में इजाफा करती है, ना कि इसकी दोबारा तशरीह कर। एक पॉइंट आप नोट कर लें कि इस बात को यकीनी बनाएं, जो आप तहकीक कर रहे हैं या आपकी जो मौजूदा इल्म में, आज ये जो आपकी तहकीक है मौजूदा इल्म में इजाफा करती है, ना कि इसकी दोबारा तशरीह करती है। ठीक है ना? तहकीक का मतलब या रिसर्च का मतलब क्या होता है कि ये आपके इल्म में क्या करती है? इजाफा करती है, यानी उसको तशरीह को आप रिसर्च से ना जोड़ें। अब जब हम बात करते हैं कि यानी कि इफेक्टिव लिटरेचर रिव्यू के जायजे की बुनियादी ज़रूरियात को, तो जब बुनियादी ज़रूरियात को हम देखते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट हम नोट करते हैं कि जामे कवरेज, मौजू से मुतल्लिका और हालिया मुतालियात को शामिल करें, तरकीब और तज्जिया, सादा खुलासे से आगे बढ़कर नतायज को तरकीब करें और उनमें मौजूद रुझानात और ताल्लुकात को उजागर करें। फिर तनकीदी जायजा, तनकीदी जायजा एक टर्म हम यूज करते हैं तनकीदी जायजे की। तनकीदी जायजा सिर्फ बयान करने के बजाय मुतालात का तजिया करें, ताकि उनकी मजबूतियों, कमजोरियों और जानबदारियों को वाज़ेह किया जा सके। और फिर हम बात करते हैं कि मुनज़्ज़म और मजबूत पेशकश, मालूमात को मंतकी तरतीब से पेश करें, अक्सर मौज़ूआत, तरीकों या ज़मानी तरतीब के मुताबिक ग्रुप करें। मुनासिब हवाला जात भी हम डिस्कस करते हैं, यानी साइटेशन। साइटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप बात साइट कर रहे हैं, उसको उसके प्रॉपर स्टाइल, यानी एपीए, एमएलए, शिकागो और भी काफ़ी सारे स्टाइल हैं, तो उसको प्रॉपर वे से यूज़ करें। और तहकीकी मवाद का तनकीदी जायजा लेने की जो हिकमत अमली है, माखज़ की मुतबर जांच जिसे हम कहते हैं,
मुसन्निफ की महारत, इशाअत की क्वालिटी और तहकीक की इतबारियत का जायज़ा लें। तहकीकी मकासद और तरीके की शनाख्त की हम बात करते हैं। हर मुताले के मकसद और इसके तरीक़ाकार को समझें ताकि इसकी मुताबिकत और मजबूती का अंदाज़ा हो सके। महदूदियत और जानबदारी का यानी कि नोट करें कि आपका जो दायरा कार है, नमूने का साइज या मुमकिन जानबदारी की किसी भी किस्म की निशानदाही करें जो तहकीक की दुरुस्ती पर असर डाल सकती है। मुतालात का मवाजना और तजाद भी चेक करें कि मुतालात के यानी कि मवाजना और तजाद, ठीक है। कंपैरिजन जब हम बात करते हैं कि जो आपका मवाद है उसका मवाजना भी करना चाहते हैं, यानी कंपैरिजन और तजाद, और उसको अंदर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो भी आप देखना चाहते हैं। मुतालात के माबैन यकसानियत और फ़र्क तलाश करें ताकि ये मालूम हो कि कहाँ इत्फाक है और कहाँ तजाद पाया जाता है। अदब के जायजे की तरतीब, तंजीम और मसवदा लिखने की हिकमत अमली अगर हम डिस्कस करते हैं तो इब्तदाई तालीमी तहकीक मुतलका शोबे के अहम मसाइल को इकट्ठा करने के लिए इब्तदाई तहकीक करें। फिर उसका खाका तैयार करें। जायजे के लिए एक ढांचा तैयार करें जिसका आगाज़ तारुफ से हो। फिर मुतालात को मौज़ूआती या तरीक़ाकार के लिहाज से ग्रुप करें और खुलासे और शनाख्तशुदा खला पर इख्तिताम करें। यानी खला का मतलब ये है कि वो जो स्पेस या जहाँ पे काम के अंदर कोई गुंजाइश है उस पर इख्तिताम करें। खुलासे और तरकीब का मसवदा, हर माखज़ का मुख्तसर खुलासा लिखें और नताइज को हम आहंग करने के लिए एक मरबूत बयानिया तैयार करें।